So people, um, I hope your conversation is not in Hindi. And if it is in Hindi, then I'm not going to be happy about it because you are hurting yourself. You guys have gathered here thinking that you are going to improve your English, and you are definitely doing something that will stop you from doing so. Do you think you will have many opportunities to speak English outside this class? Then why not use the time? The 90 minutes you have here. That's the only time you can practice English. You don't have many friends to practice English with outside. So let's not spoil the environment in the class, speaking Hindi, please. Sajid, come all the way here. Because I want you closer. Sajid, come here. Arey yaar. Oh dear. Arey yaar. The reaction should be in English. Oh dear. Yes, please come. Please come. Yes, here. Rudra, beta, go sit there, please. I know you will be focused no matter where you sit. Okay. You guys are behaving childishly, so I have to do this. Okay. Who's sitting there in the corner behind you? Okay, in the mom. And okay. And means I really don't want to do this, but you're making me. Okay. Mm. Okay. Yeah, you're making me. It's not my choice. Okay, I would like maybe you, dear, Arsalan, come over here. Sit in the corner here, behind Adnan. Okay. Yes. Yeah. No, not him, Mashuk. With you. Exchange your seats, you and Mashuk. Yes. What is so funny, you silly? What's so funny? What are you laughing about? You come over here. Yes, you. I like when he laughs it because he works hard. You don't work hard. You don't have the right to laugh. Yeah, come over here. Bring that chair. Sit here in the corner. Yeah, good for you. So now we will study. So what are we gonna study, guys? There was homework, wasn't there? We have already started Unit 7. And the other day, on Saturday, we practiced forming questions. The tikri, the dukri, and then some special questions where there is no did. For example, कौन आया था party में? Who came to the party? Who came to the party? Okay. Remember, there are two things, knowledge and habit. When you are here, your knowledge will definitely grow. I promise that because you're listening to me. Habit, you can help your habit. You can just try and speak more
English to each other, and that's how you can develop your habit. Sajid beta, you're a good student, but I don't know whether you will develop the habit because you answered the question correctly. Who came to the party? Okay. So now let's go to the main book, Unit 7. There was a conversation between a grandson and a grandfather, right? They are talking about grandfather's childhood. I'm inviting somebody to the class, a lady. Let's see if she can come. Just a second. Let's see. I've invited her. Kurdistan. Kurdistan is not a real country, but there are people who call themselves Kurds, Kurdish people. So, yeah, I've always been fascinated in their history, by their history. When you heard about the ISIS, the Syrian, uh, you know, terrorist organization, they were really, really rude and, aggressive and torturous to Kurdish people. They targeted Kurdish people so much. They targeted their villages, they kidnapped girls. There are documentaries available what they did to Kurdish girls. So don't know if she comes, it will be amazing to listen to her. Okay. Now let's look at this. The good old days, past simple questions and negatives. Listen to Tommy talking to his granddad Bill about when Bill was young. They are talking about when Bill was young. वो किस बारे में बात करें? जब Bill young थे यानी छोटे थे. Okay. So take the things they talk about. Did you tick? What are the things they talked about?
did they कैसे पूछेंगे? उन्होंने प्रोग्राम टीवी प्रोग्राम के बारे में बात की? Did they talk about programs on TV? Did they? They did. What did they say? If you remember. No, what did they say? I don't want you to repeat the conversation. What did you learn from the conversation? When granddad was young, there were only and programs did not start in the morning. Programs started at 4:30, right? And yeah, grandfather was very excited about TV programs. Yeah, he loved watching TV. Okay, nowadays people don't really enjoy watching TV as much. Back then there were only 2 channels, but grandfather was happy with those 2 channels. Okay. Sport. Did they talk about sport? They didn't talk about sport. Did they talk about pocket money? What did they say? What did you hear? Grandfather got only 6 pence a week. Oh, doesn't matter how much money, because the currency is foreign currency. You won't understand pence. But he got a little bit of pocket money. But for that pocket money, he worked. For that pocket money, उस pocket money के लिए, he worked. वो काम करते थे. He worked. All right. He cleaned the kitchen. He did the washing up. Okay. Next, housework. Yes, he helped his mother in the kitchen, right? Comics. Did they talk about comics? What did they say? Grandfather bought comics with his pocket money. If you remember, if you listened, if you understood. मैं जब भी टास्क दूं लिसनिंग, तो मैं चाहूंगा कि उसको, उसमें एक बुरा करने की वजह एक होती है कम करना. जैसे आप 10 मिनट खाओगे तो कम खाओगे, अगर 4 घंटे खाओगे तो ज्यादा खाओगे, है ना? तो अगर आपको ऑडियो फाइल दे दी जाए होमवर्क के तौर पे और आप आते हो अनप्रिपेयर्ड, तो इसका एक ही मतलब होता है, आपने टाइम नहीं दिया. अगर आप टाइम देंगे, अरे you're back here, I'm forgetting your name. Aman, how are you doing, Aman? Okay, Aman is back, and Aman was sitting with his close friend Shlok. I see. Yeah. जा बैठ जा उसके चक्कर, जा उसके लिए बैठ जा. मैं उसके साथ गलत नहीं करना चाहता. अमन बेटा, कंफर्टेबल फील करना जरूरी है क्लास में, लेकिन धीरे धीरे सीखना जरूरी है बेटा. ठीक है बेटा, धीरे धीरे सीखना भी जरूरी है. ठीक है. चलो, अगर हम फोर्स करके सिखाएं तो मजा नहीं है, और हम छोड़ दें और आप भी छोड़ दें तो उसमें भी मजा नहीं है. हम आपको प्रेशर ना डालें और आपको लगे कि हम तो यहाँ सीखने के लिए आए, हम कोशिश करेंगे, वो वाला एटीट्यूड मस्त होगा. There is a girl called Kakasha. Her English is not very good. Okay, her English is definitely not very good. She is attending classes online. Ever since she joined, she's been very regular, very focused. She asks other people in the class to help her after the class. She spends time talking to other people, discussing things. धीरे धीरे. मेन क्या है, मैं कुछ नहीं बोलता उसको कि ये करो वो करो. She is doing it from her side, क्योंकि she has joined the class. I didn't tell her, hey, come join the class. Her father didn't force her, go join the class. She decided to join the class because she wanted to learn. So she's now making an effort. थोड़ा थोड़ा और प्रेशर ना रही, अच्छी बात है ना. But sometimes what happens, the teacher doesn't ask questions, तो बाकी लोग छोड़ चल रहा है. ठीक. That's a very careless attitude in life. कि भाई कुछ बोल नहीं रहा कोई तो हम भी नहीं परवाह करें. आपकी जिंदगी है, आप यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना? अगर उसको यूज करोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू. Comics. So grandfather bought comics with the pocket money. And what else did he do with the pocket money? What else did he do with the pocket money? He bought comics and sweets. He bought comics and sweets. जो sweets वो बोल रहे हैं ना, हम लोग के लिए वो candies वगैरह समझ लो, chocolate वगैरह, candies and chocolate. Okay. Indian sweets are different. There is a special sweet shop, and our sweets are very different, guys. If you talk about sweets in England and America, they're different. Mainly, it is made of sugar only. Our sweets are made of milk and sugar. Okay,
Most of the sweets have their base in milk. We have milk, then we make chena with milk, and then we make sweets. We make khova from milk, and then we make sweets. So our sweets are sugar and milk, combination of these two. They mainly make sweets with sugar, okay? But now, not all countries. Like, for example, Turkey. Turkey is very famous for its cuisines, Turkish cuisines, especially the sweets there. They have some sweets with chicken. Are you surprised? Yes, sir. They have sweets with chicken. Chicken को use करते हैं, ऐसे बनाते हैं that it is sweets. A dish. It will not be spicy. It will be sweet, and it is made of chicken meat. So बहुत जगह बहुत कुछ okay जानने चाहिए. There is a channel called TLC. Do you know TLC? Anybody? I don't remember the full name, but there was a time I used to watch that channel a lot. People would travel, go to different hotels, stay there, travel around and talk about, it was really fun to learn about other countries and cultures. A lot of people are interested in learning about other countries and cultures, but they don't have time and money to travel. So for them, TLC is amazing. They can just sit in front of the TV, somebody else is traveling, and they make travelogues, okay? And you just learn from their experience. So yeah, I learned about it. Holidays. Did they talk about holidays, guys? What did they say about holidays? Yes, they did not go abroad. Okay. Because those days, flight was very expensive. Exactly. Now I'm going to play the audio for you. Let's learn line by line. चलो सुनते हैं. Let's listen. 7.2. Tape script 7.2. The good old days. Grandad, when you were a boy, did you have television? Granddad, जब आप बच्चे थे तो टीवी था क्या? Okay, English. Granddad, when you were a boy, did you have television? Did you have? हम लोग ने प्रेजेंट में सीखा. We learned in the present. Do you have a car? तुम्हारे पास कार है? Do you have a car? Okay. कैसे बोलते बेटा? Do you have a car? Okay. आपका अपना घर है क्या? Do you have your own house? Okay. Do you have your own house? Okay. तुम्हारे पास बाइक है क्या? Do you have a bike? Do you have a bike? Right? And तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? तुम्हारी बहन है क्या? Do you have a sister? ये खाली चीजों के बारे में नहीं, रिलेशन पे भी होता है. Okay? So, do you have, right? Past tense? Easy. Did you have? Okay. So, Granddad, when you were a boy, did you have television? Granddad, when you were a boy, did you have television? Grandfather's reply. Of course we had television. Of course we had television. Of course we had television. He wants to say, कैसे सोच रहे हो कि television नहीं होगा? Of course we had television. He did not straight away say, yes, we had television. He's saying, of course we had television. All right? मतलब ये कौन सा बात है? था भाई, जाहिर सी बात है था. That's his attitude. अगर सीधा बोलना हाँ था तो बेटा yes. लेकिन उसने नहीं बोला. उसने कहा, of course we had television. जाहिर सी बात है टेलीविजन था, है ना? Okay. Suppose you come home after 5 hours from school or from classes, okay, from work.
मम्मी और दीदी ask, are you hungry? Of course I'm hungry. 5 hours ago I ate my meal. I had my meal 5 hours ago. Of course I'm hungry. एक भी जवाब है ना एक, कि ज्यादा भूख नहीं लगे रहेगा, 5 घंटा पहले खाए थे, right? Of course I am hungry. I had my meal. I had my meal. We too? 5 hours ago. So of course I'm hungry. Okay. Suppose your friend, a special friend, said something bad, और तुमने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, टेक्स्ट करना बंद कर दी. ओके, बिकॉज यू आर एंग्री. काहे उसने ऐसा बोला, राइट? व्हाई शी सेड दैट. उसके बाद वो लिखती है, आर यू एंग्री? ऑफ कोर्स आई एम एंग्री. यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट माय फ्रेंड, नॉट अबाउट मी. यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट माय फ्रेंड, नॉट अबाउट मी. हो गया? ऑफ कोर्स समझ में आया? ऑफ कोर्स आई एम एंग्री. ऑफ कोर्स आई एम अनॉयड. यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट माय फ्रेंड, नॉट अबाउट मी. Why don't you message him? Stop talking to me. Okay, done. Of course we had television. Now I hope you understand the purpose why he said of course. Why not he said yes, I had a TV. I had TV. Of course we had TV. Vision. Beta, just one more thing. Good old days. Grandad, when you were a boy, did you have television? Of course we had television. He said we had television. He did not say I had a television. Okay. Okay. Beta, when we say television, it means two things. अब बोलेंगे ऐसा कैसे, दो चीज कैसे हो सकता है? देखो, टेलीविजन इज एन आइडिया बेटा, कि कोई चीज यहां नहीं है, आप उसको फिर भी देख रहे हो. एक आइडिया है टेलीविजन का, आइडिया. और एक टेलीविजन सेट, टेलीविजन सेट है ना, डिवाइस. तो वो सेट जो है वो ए टेलीविजन है, और टेलीविजन सिर्फ टेलीविजन है. तो उसने क्या पूछा था बेटा? डिड यू हैव टेलीविजन? इसने नहीं पूछा डिड यू हैव ए टेलीविजन. उसने अगर पूछा होता डिड यू हैव अ टेलीविजन, तो फैमिली के बारे में पूछता. ए लगाने से मेरा बच्चा समझो, डिड यू हैव ए टेलीविजन, ये सवाल होता तुम्हारे घर में टेलीविजन था कि नहीं. ए टेलीविजन तो सेट होता है, तो सेट तुम्हारे घर में था कि नहीं. डिड यू हैव टेलीविजन मतलब उन दिनों टेलीविजन होता था कि नहीं. जैसे इंटरनेट बात करते हैं, ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना, उन दिनों इंटरनेट नहीं होता था, ऐसा बोल रहे हैं ना. वी डिडंट हैव इंटरनेट इन दोज डेज. ओके. तो उस तरह से पूछा उसने, डिड यू हैव टेलीविजन. तो ग्रैंडडैड सेड ऑफ कोर्स वी हैड टेलीविजन. टेलीविजन तो था ही, बट इट वाजंट ए कलर टीवी. लेकिन उन दिनों कलर टीवी नहीं होता. इट वाजंट ए कलर टीवी, इट वाज ब्लैक एंड व्हाइट. Vision. But it wasn't a colour TV. But it wasn't a color TV. Grandad, when you were a boy, did you have television? Of course we had television. ऑलवेज प्रैक्टिस. और प्रैक्टिस में कोई दिखावा प्रैक्टिस नहीं, अंदर में प्रैक्टिस होता है. मुंह से हल्का हल्का बोलना होता है, मेन अपने दिमाग में चलाना होता है कि ये इस वजह से, ये इस वजह से मुझे सिखाया गया है. अगर आपको रीजनिंग समझ में आती है तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर आप आवाजें दोहरा रहे हैं और आपका दिमाग बैठा हुआ है कि कुछ नहीं समझ आ रहा, क्यों क्यों कैसे, तो फिर आपका प्रैक्टिस बेकार है सर. वो तो सब जगह चले जाओ, मंदिर में चले जाओ तो सब खड़े होकर के ओम राजा रामचंद्र जी की जा रहे थे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं. राइट? बात समझ में आ रहा है? वैसे ही जमात लगा लो पीछे, सब लोग कुछ बोल रहे, पता नहीं क्या बोल रहे. वो लाइक प्रैक्टिस नहीं चाहिए. हम आपके पंडित जी और मुल्ला नहीं है कि हमारे साथ साथ आप बोलते जाइएगा. आपको सीखना है, समझना है कि आप क्या मुंह से निकाल रहे हैं. इज दैट क्लियर? एक बचपन की आदत होती है लोगों को रट्टा मार जाने की, मुंह से आवाज निकाल रहे हैं, बाकी दिमाग बंद है. डोंट डू दैट. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप चुप हो जाओ. कम से कम टीचर को मैसेज गया कि यह लड़का नहीं बोल रहा है, इसको नहीं पता है, इसको हेल्प चाहिए. आप प्रेशर में सब बोल रहा है, हम भी बोलेंगे क्योंकि सबकी आवाज आ रही है, आप ऐसे से कर लिए तो लगा कि हम भी बोल. ऐसा क्यों करोगे? क्यों करोगे ऐसा तुम? अपनी इज्जत के लिए. कौन सी इज्जत? नंगे पैदा हुए थे तुम? अरे मजाक है, सब नंगे पैदा होते हैं. नो, पॉइंट इज क्लास में इज्जत नहीं होती. मतलब आपको उस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि मेरी इज्जत खराब हो गई, मुझे नहीं समझ में आया तो. डोंट थिंक लाइक दिस. अगर आप, मैंने बताया ना क्या कशा के बारे में, कि वो ध्यान दे रही है, ट्राई कर रही है,
मैं पता है मुझे कि उसको बहुत समय लगना है, शी डजंट नो मच इंग्लिश, ओके। लेकिन अगर आप सिंसियर होगे, एफर्ट मारोगे, देन यू विल चेंज वन डे। अगर आप फेक करोगे, यू विल नेवर चेंज। तो पहली बात हटा दो दिमाग से कि फेकिंग इज एन आइडिया हियर। फेकिंग इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस क्लास, है ना। तुम्हें नहीं एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। मान लो तुम्हें कोई दुकान में जाओ, 5,000 रुपए दिए सामान लेने के लिए, अब वो ऐसे झूठ में ऐसे सामान लेकर के चले आओगे, हाथ में कुछ नहीं, रंज खाली से दिखावा करके चले आओगे। यहाँ तो कर रहे हो क्या, दिखावा ही था ना वो, सीख नहीं रहे फिर भी। डोंट डू दैट। ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, क्या क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ। मैंने कोशिश की एक एक वर्ड समझाने की, ओके। ऑफ कोर्स वी हैड टेलीविजन, बट it wasn't a color TV. It was black and But it white, wasn't a colour TV like now. like now. It wasn't a color TV like now. It was It was black and white. black and white. And were there lots and lots of channels? And were there lots and lots of channels? And were there lots and lots of channels? Again, you have studied, आप पढ़े हैं. There are a lot of trees. There are को आगे लाओ. Are there a lot of trees? There are a lot of students. Are there a lot of students? पास कर दो. Were there a lot of students? ढेर सारे students थे. बात होगी. तो were there lots and lots of TV channels? Were there lots and lots of, बच्चे ऐसे बोलते हैं, lots and lots of, है ना. एक ही वर्ड को दो बार. Lots and lots of TV channels. How many TV channels? Of course we had television. But it wasn't a colour TV like now. It was black and white. And were there lots and lots of channels? Were there lots and lots of channels? How many TV channels were there? How many TV channels? How many TV channels? अब इस पे फोकस कर लें, दिमाग में ले जाएं. अच्छा, नंबर पूछना ऐसे पूछते हैं. How many TV channels? How many TV channels? Right? ये लड़का जो है तुम्हारा श्लोक, इसकी बॉडी लैंग्वेज रोड पे एकदम अलग होती है. बिंदास एकदम, मतलब अपने आसपास 3-4 फीट तक आदमी को खड़ा नहीं होने देगा ये. ठीक है, मैंने आज देखा. ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, एकदम मस्त बात करता है, ऐसे बात करता है, ऐसे करके चलेगा, बात करेगा. और यहाँ देखो उसकी पर्सनालिटी. दब्बूपन कहाँ से आता है पता है? एहसास से कि हम अच्छे नहीं है. वहां उसको एहसास नहीं होता. वहां लगता है कि हम जैसे ये हैं हम भी वैसे ही हैं. यहाँ उसको ये एहसास नहीं हो पाता. तो ये तुम्हारे ऊपर है. कमतरी का एहसास, you have to get rid of that by working hard. Because if you have that feeling, ना, एहसास कमतरी, inferiority complex, okay, you can't do anything भैया. तो पहले आपको मानना पड़ेगा like everybody else. और वो कैसे आएगा? With your hard work. तो बेटा क्या था लास्ट लाइन? राइट. और कैसे पूछा कितने चैनल्स थे? राइट. एनी प्रॉब्लम्स? ओके. तो बेटा श्लोक, अगर आप समझ रहे थे पढ़ाई जो हो रही थी, तो आपसे मैं सवाल पूछूंगा. जल्दी से बताइए. आपको मुझसे जानना है कि बचपन में मेरे घर में कितने कमरे थे. पूछिए. हाँ, पहला 2 वर्ड 3 वर्ड ही बोल देगा ना, तो फिर बाकी का टेंशन मुझे नहीं है. हाँ बोल बेटा. अभी ये उस लड़के से इसको मिलाओगे ना तो लगे कोई और है. वो एकदम मस्त है. अब ये पर्सनालिटी क्यों है? बिकॉज यू डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट. यू डोंट डू एनीथिंग टू चेंज इट. जल्दी से बोलो, बात खत्म हो जाती है. मैंने अभी पढ़ा है ना. कैसे पूछना है? क्या पूछना है? हिंदी में बताओ. कितने कमरे थे? हाँ पूछो. गब्बर सिंह कितने आदमी थे? कैसे पूछेगा? उसको हाँ हाँ बोलो. कैसे पूछना था? हाउ मेनी रूम्स आर? थे में आर है ना दोस्तों. बस यही चीज की प्रैक्टिस लगती है ना. हाउ मेनी रूम्स इन योर, अगर यही ऑप्शन है, डिड से भी हो सकता है. हाउ मेनी रूम्स डिड यू हैव इन योर हाउस?
How many rooms were there? How many rooms did you have? Right. How many rooms did you have in your house? Yeah. How many rooms did you have in your house? How many rooms were there in your house? Just like this sentence. How many TV channels were there? Only 2. Only 2. तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? कैसे पूछेंगे? How many fingers do you have? Very good. In your hand or in your hands. Okay. How many fingers are there? All right. Yeah. Okay. Fine. कितने भाई बहन है तुम्हारे? Right. बचपन में तुम्हारे कितने दोस्त थे? How many friends did you have in your childhood? How many friends did you have in your childhood? एकदम नहीं छोड़ सकते, एकदम नहीं छोड़ सकते इन सेंटेंसेस को, एकदम आसानी से आप कंटिन्यू कर सकते हैं. How many friends did you have in your childhood? 3 टुकड़े हैं, तीनों का अपना अपना लॉजिक है. How many friends का अलग लॉजिक है, ठीक है. How many friends का अलग लॉजिक है. Did you have अपना चल रहा है, और in your childhood अलग है. 3 टुकड़े हैं, 9 वर्ड्स नहीं है. कुछ लोग को 9 वर्ड्स सुनाई पड़ेंगे. How many friends did you have in your childhood? हम लोग के लिए 3 ही है. How many friends did you have in your child? ये did you have कई बार यूज होगा. और how many friends की जगह how many spoons, how many enemies, how many rooms कई जगह यूज होगा. तो ये अपने आप में एक बन गया. राइट. हाँ, वो भी सही बोल रहे हो तुम, है ना. तो in your childhood, you know, हाँ, in your life, okay, in your class, ये अलग है. तो ये इस तरह से दिमाग में खांचे बनने शुरू होते हैं इंग्लिश बोलने के लिए. ऐसे कई स्टूडेंट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, जो सुबह मैंने वहाँ क्लास शुरू किया ना, वहाँ पढ़ा, और जो आपकी फ्रेंड्स वगैरह आई हैं, तो उनके लिए अब ये सारी चीजें ना धीरे बहुत मुश्किल हो रही हैं. तो आप लोग उनसे कहीं बहुत ज्यादा ऑब्वियसली क्यों नहीं आगे होंगे. यू हैव स्पेंट मोर टाइम. तो ये खांचे बनाना जरूरी है. तो 9 वर्ड्स नहीं है देखा जाए तो, बस 3 ही हिस्से हैं. कितने दोस्त है आपके बचपन में? हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड यू हैव? राइट. तो हाउ मेनी चैनल्स वर देयर? ओनली 2. But that was enough. But that was enough. But that was, he didn't want more channels. Enough means as much as you need, as much as you want. Okay. Mummy is putting rice in your plate. Then you say, Mummy, enough. It means this is all I want. I don't want more. Okay. So this is enough. Okay. I have asked you before. मैंने पहले भी पूछा, फिर पूछूंगा. आपके पॉकेट में 6 रुपए हैं. इनफ है कि नहीं है? फिर फंसे तुम, है ना बेटा? याद है ना, पढ़ाया था यही, एकदम ऐसे ही पूछ के पढ़ाया था. सब फंस गए ना फिर से एक बार. ऐसे ही होता है रुद्र, फंस के बेटा. ठीक है, क्योंकि आप ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे ही होगा. आप सवाल होना चाहिए किस चीज के लिए, है ना बेटा? 6 रुपीज है आपके पॉकेट में. मैंने पूछा इज इट इनफ? आप नहीं डिसाइड करेंगे हाँ या ना, आप पूछेंगे किस काम के लिए. If you want to buy a pencil, yes, you have enough. But if you want to buy a samosa, no. Because a samosa costs 12 rupees, you have 6 rupees. You want to buy a pencil costs 5 rupees or 6 rupees, you have 6 rupees. So yes, you have enough money to buy a pencil, but you don't have enough money to buy a samosa. So don't say that 6 rupees is not enough or enough without knowing the purpose. मैंने यही पढ़ा था ना? Remember? Okay. तो रिवीजन देता हूं मैं. अगर थोड़ा सा हो जाए कि ध्यान निकल गया तो I do give revision. It's not like that. So, but that was enough. Means he did not complain why we have only 2 channels. Now imagine if today we have only 2 channels. Then what will happen, guys? We will start crying. What? Only 2 channels? Yeah, you're not gonna be happy about it. So there were only 2 channels, but that was enough. That was enough. मतलब 2 channels were enough. That was enough. ठीक था. We loved it. We loved it. बहुत मजा आता था हम लोग को. We loved it. बहुत पसंद था हम लोग को कि हाँ भाई 2 चैनल देखना है, एंजॉय करना है. We loved it. And there weren't programs all day long. And there weren't programs all day long. There weren't. Want है, were not.
उसको साथ में क्या बोलते बेटा? Want. Their want programs all day long. Their want programs all day long. दिन भर प्रोग्राम नहीं होता था. Their want programs all day long. दिन भर नहीं चलता था प्रोग्राम. Rani is not here. Rani is absent. Their want programs all day long. And I think you know about your friend. What is her name? Your friend's name. What is her name? The one who came here. The beautiful name. Nikita. Yeah, Nikita. Yeah, Nikita will perhaps join after she, she's pregnant. She's expecting a baby. She is expecting a baby. That is how we say it in English. Okay. So obviously it's difficult. However, some women, like I have another student who is also expecting a baby, but she's attending classes online, Ruksar, so depends. Yeah. Okay, maybe because Ruksar is an old student, she has already started, she is getting along fine. So my classes are fun. You don't have to sweat in my class. Sweat matlab bahut mehnat karke pasina bahana. You don't have to do that. You have to sit, practice outside the class a little bit. Maybe Nikita के लिए भी वो journey start नहीं हुई थी ना. That's why it is difficult for her. ये ऐसा है, समझ लो कि जैसे एक बिजनेस होता है, शुरू में बहुत मुश्किलें होती है, 10 लोग चाहिए, देख फिर एक स्मूथली चलने लगता है, चलता है, प्रॉफिट भी आ रहा होता है. तो ये उस टाइप का क्लास होता है. आप अगर सीखने लग जाएं तो फिर आप क्लास में आते हैं, सुनते हैं मेरी बात, घर पे जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और आप हर दिन बेहतर होते जाते हैं. कोई मेहनत ज्यादा नहीं लगती, और ना ही आपको ये लगेगा कि हम बहुत पसीना बहा रहे हैं, ऐसा भी नहीं लगेगा. यस, यू नीड टू गिव टाइम देना होगा, लेकिन वो टाइम देने में ज्यादातर लोग एंजॉय भी करते हैं. मजा आता है उनको, वो सुनना, लिखना, प्रैक्टिस करना, उसको मजा आता है. और जिस काम में मजा आने लगे वो काम तो हम करेंगे ही करेंगे, ऑब्वियसली. तो ट्राई एंड फाइंड दैट जॉय इन लर्निंग. ओके, फाइंड दैट जॉय. वो जॉय ढूंढो, जॉय, फाइंड दैट जॉय. जॉय. ओके. So he says, they want programs all day long. Then why did he say that? Because today we have programs all day long. So grandfather is comparing. When a grandfather or grandmother talks about their childhood, they usually compare their time to today's, right? So he said, there weren't programs all day long. It means there are programs all day long today. But back then, when he was a child, there weren't programs all day long. There weren't programs all day long. Okay. Nothing in the morning and nothing in the afternoon. Nothing in the morning and nothing in the afternoon. And I know that. Time when there weren't programs all day long. When I was a child, there were not programs all day long. We waited for the station to open. We waited for the station to open. हम लोग यही बोलते थे, स्टेशन नहीं खुला है, स्टेशन खुलेगा. So we would sit in front of the TV when it was time, and there would be, normally the TV would have no pictures, okay, just some small, like, yeah, and there would be a very funny bad noise, yeah. And then when the programs were to start, 5-7 minutes before the start, the screen will change. There will be a screen with some stripes, different colors. Okay, 7 stripes, and the audio will also change to coo, from zzz to coo, and we would say, now the station is going to open, and we kids would be very excited about it. Khulega, khul gaya. We would announce everybody. And then all the children would run, come and sit to watch TV. Oh my goodness, what times they were. हाँ, एंटीना वाला तो सबको पता है, नहीं हुआ, हाँ हो गया. Oh, those were the days. Yes, absolutely. They will never come back again. We miss those days sometimes. Life was simple, life was very simple. Where we have reached. छोटे छोटे लड़के लड़कियां, बच्चे बच्चियां, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर रहे हैं, माता पिता से कट रहे हैं, ठीक है, कम ही उम्र में एक्सपोजर इतना ज्यादा हो रहा है. इट्स सो डिसअपॉइंटिंग समटाइम्स. फिर कुछ और चीजें भी हैं जो अच्छी भी लगती हैं.
you know, like when I was a boy, I had to depend on my teachers for every single information, single piece of information. There was no other source. There were books, that's it. But today, you can always have access to all the teachers in the world. You can mail them, you can talk to them on their Twitter, you can talk to them, you can ask them for help. You know, the world is becoming smaller and smaller. Earlier, it was like America. Today, it doesn't feel like America. Today, we talk about Mars. Mars is far. America is not far. Okay. Hmm. So let's continue. What was the line? That was enough. There weren't programs all day long, nothing in the morning and nothing in the afternoon. Oh no! Oh no! Arey yaar! Eh? Oh no! Oh dear! Oh no! These are reactions when you're not happy, right? No. What time did programs begin? Easy question. Repeat. The same formula. What time did programs begin? What time did the programs begin? What time did the programs begin? प्रोग्राम कितना बजे शुरू होता था? What time did the programs begin? Right? है ना? आसान है ना? क्या है? कैसे था सेंटेंस? बेटा बच्चा बोलेगा. ठीक है, बोल तो बेटा कैसे बोलना है? प्रोग्राम कितने बजे शुरू होता था? यस, जरा. हाँ बेटा. What time begin? है ना बेटा? प्रोग्राम कितने बजे शुरू होता था? खत्म करने के लिए कौन सा वर्ड हटा देंगे बेटा? कौन सा वर्ड लगा देंगे? प्रोग्राम कितने बजे खत्म होता था? कैसे करेंगे? बिगिन हटा देंगे, एंड लगा देंगे. बोल दो बेटा एक बार और. प्रोग्राम्स एंड. मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है बच्चों के दिमाग में शब्दों के क्रम के बारे में कॉन्सेप्ट डेवलप करना. ये शब्द हटेगा, ये लगेगा तो ऐसे मीनिंग चेंज होगी. मैं सोचता हूं ये बहुत आसान है, लेकिन जब मैं करने जाता हूं नए स्टूडेंट के साथ, तो उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि कौन सा शब्द हट रहा है, कौन सा शब्द आ रहा है. वो एकदम परेशान रहते हैं. यही अचीवमेंट है, यहां से स्मूथ चलता है. इसका दिमाग काम कर रहा है कि वो बिगिन था, शुरू हुआ, एंड होएगा. अच्छा बेटा, प्रोग्राम की जगह क्लास बोलना है तो कैसे बोलेंगे बेटा? क्लास कितने बजे शुरू होता था? देख रहे हैं ना बेटा? और इसके लिए हिंदी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रांसलेशन ये भी है, लेकिन दिमाग में हिंदी है और फिर मुंह पे इंग्लिश है. पता चल रहा है? और अगर ये तो डेट की बात हो गई, होता था. अगर मान लो कोई दोस्त पूछ दिया रास्ते में, बात करना चाह रही है और तुम बोले मेरा क्लास देर हो रहा है, तो पूछेगी ना, अरे कितने बजे शुरू होता है क्लास? तो कौन सा वर्ड बदलेंगे बेटा? वो पूछेगी रास्ते में आ रही हो तुम भाई के साथ, यूर कमिंग, ओके, ए गर्ल. No, 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 no. Please cooperate. Please cooperate, everybody. You're coming with your brother. You saw a friend. She smiled. You smiled. Hi. Then she starts talking. Okay. You want to talk, but you don't want to be late. She say, दोस्त जाना है, बाद में बात करते हैं, ठीक है क्लास. तो उसने पूछा कितने बजे शुरू होता है क्लास? कितने बजे शुरू होता था? कितने बजे शुरू होता है? तो कौन सा वर्ड बदलेंगे? डिड को जगह या तो डू या तो डज. डिड के जगह या तो डू, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज. सिंगुलर है क्लास, तो व्हाट टाइम डज योर क्लास बिगिन? व्हाट टाइम डज योर क्लास बिगिन? डिड इज द पास्ट ना बेटा. डिड हटा, डू या डज दोनों में से कोई भी. ठीक है. आई एम वेरी प्राउड. मुझे पता है अगर कोई भी बच्चा, मैंने कई बार तारीफ करी बच्ची की कि ध्यान लगाती है, उसको भी खींचते रहती, भाई भाई ये, भाई ये. ठीक है. तो this is what I say. The other day people were talking about my achievements in life, कि आप प्रोफेसर क्यों नहीं बने, ये क्यों नहीं. मेरे कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था. यही करने मुझे इंटरेस्ट आता है, इस बच्ची को बदलने में. क्या ये बच्ची पहले क्लास नहीं गई? क्या बाकी लोग अपने आप को मान लेंगे कि मेरे जितने अच्छे टीचर नहीं है? क्या वो मेरे से कम सैलरी एक्सेप्ट करेंगे? नहीं. लेकिन क्यों नहीं चेंज लाए? क्या ये करना नहीं चाहती थी? अगर नहीं करना चाहती थी तो अभी कैसे की? तो सीधी सी बात है, इफ यू नो कहां पर आपको कैसे हेल्प करना है. और बाकी वो जो केयरलेस लोग हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता. आपके अंदर थोड़ी ख्वाहिश तो होनी चाहिए. ठीक है. बाकी अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ बैठा करके धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप कराऊं. हंसी मजाक का पर्पस क्या है?
अगर आप समझें इस बात को, तो कई लोग मुझे जज करेंगे इस बात के लिए कि मैं इतना हंसी मजाक करता हूं, लेकिन मैं परवाह नहीं करता, बिकॉज इट हेल्प्स मी। हाँ, आप अच्छा फील करें ना कि दीदी बहन ने सही सही जवाब दिया, ये ही इज फीलिंग वेरी प्राउड। ठीक किया जरा, well done, जरा तुम भी कोशिश करो बेटा, ठीक है, ऐसे ही दिमाग लगाओ जैसे वो लगा रही हैं, हाँ? तो मेरा पर्पस, यूनिट ये जो 7 है, इट इज ऑल्सो अबाउट द पास्ट टाइम, पास्ट टेंस। यूनिट 6 वॉज अबाउट पास्ट टेंस। सोचो, वाई अनदर यूनिट? कभी इतनी लंबी पास्ट टेंस की पढ़ाई किसी क्लास में जो हो जाए, क्योंकि उनको अंदाजा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। वो उनको लगता है ना, सब्जेक्ट प्लस V2 बोर्ड पे लिख देंगे ना, तो तुम्हारा दिमाग उसको फिगर आउट कर लेगा कैसे फॉलो करना है लाइफ में, बोलते समय, लिखते समय। बेवकूफी है। 5% बच्चे कर सकते हैं उससे, बाकी 95% स्ट्रगल ही करते रहेंगे। तो हम 5% को सिखाएंगे। वी विल टारगेट ऑल द स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स। So, what time did programs begin? The grandson asked. When the grandfather said, programs didn't there were no programs all day long. There weren't programs all day long. Then naturally he wants to know, okay, if there weren't programs all day long, then what time did programs begin? At 4:30, At 4:30. At 4:30. Programs began at in the afternoon. when children's TV started. When children's TV started, हाँ, तो 4:30 क्या होता था? Children's TV start होता था, ठीक है? It means the first programs were for children. That's true, because सबको पता है when the station started, children would be the first, to watch. So in those days, the first programs were only for children, yeah, cartoons and stuff. There were some great programs for us children. There were some great programs for us children, I can tell you. It's a long sentence, but again, you can break it down into small parts. There were some great programs. There were some great programs for us children. For us children, I can tell you. Leave I can tell you. I can tell you को छोड़ देते हैं, okay? I can tell you को छोड़ देते हैं, इधर रहते हैं. There were some great programs for us children. Okay, so he is talking about his childhood. तो उसने us children का, हम बच्चों के लिए क्या अभी वो अच्छा नहीं है जब था। अच्छा, हम लड़कियों के बारे में बोलें, ऐसा हम बोल सकते हैं हम लड़कियों को बहुत झेलना पड़ता है, हम ये बात बोल सकते हैं? नो, गर्ल्स कैन से दिस, राइट, बिकॉज दे आर वन ऑफ द गर्ल्स, राइट। आई कैन से लड़कियों को झेलना पड़ता है, आई विल नॉट से हम लड़कियों को झेलना पड़ता, राइट। आई कैन से हम बिहारियों को जज किया जाता है, but somebody from UP cannot say हम बिहारियों को जज किया जाता है, because when you say हम बिहारी, then you are saying you are part of that group, right? तो बेटा उसने कहा there were some great programs for us children. तो आप लोग भी तो हो ना, आप स्टूडेंट हो, बॉय हो, गर्ल हो, तो अपने बारे में कुछ ऐसा लाइन बोल सकते हो क्या? हम लड़कों पे बहुत प्रेशर होता है सर, कैसे बोलेंगे? There is a lot of pressure on us boys. आसान है, कोशिश करने की जरूरत है। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर सर ऑन अस बॉयज। लड़कियां ये लाइन नहीं बोल पाएंगी, वो अस छोड़ के बोल सकती है, इस बात को अग्री करेंगी। यस, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन, ये बोलेंगे, राइट। हाँ, लड़कियां से समथिंग, हम लड़कियों को बहुत जज किया जाता है सर। पीपल जज, पीपल जज, आगे क्या बोलोगे? हम लोग क्या बोलेंगे? पीपल जज गर्ल्स, पीपल जज, लड़कियों को लोग जज करते हैं। आप क्या बोलेंगे? लड़कियां क्या बोलेंगी? पीपल जज अस गर्ल्स। ये थोड़ा अजीब लगेगा, पर आदत नहीं है ना, बोलने की आदत डालें प्लीज। आप भाई लोग हैं ना, आप लोग भाई भी तो हैं, भाई का कम्युनिटी है ना, तो आप ऐसे ही तो बोल सकते हैं, ठीक है? कैसे बोलेंगे? आप बहनें हैं तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कुछ बहनों के बारे में, कि हम बहनें अपने भाइयों के लिए कुछ भी कर सकती हैं, ऐसे बोलेंगे ना। वी सिस्टर्स, जब सब्जेक्ट है तो अस सिस्टर्स नहीं, वी सिस्टर्स। जब उधर जाए तो अस सिस्टर्स, वी अस। तो कैसे बोलेंगे? हम लड़कियां, हम बहनें अपने भाइयों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वी सिस्टर्स कैन डू एनीथिंग फॉर आवर ब्रदर्स। और लड़के कैसे बोलेंगे? हम भाई लोग अपनी बहनों के लिए जान भी दे देते हैं, राइट? कैसे बोलेंगे? हाँ, और ले भी लेते हैं। वी ब्रदर्स, है ना, कैन किल and die for our sisters. We brothers can
kill and die for our sisters. ये we और us वाला समझ आ रहा है? हाँ, हम भारतीयों को ना दुनिया बहुत ज्यादा नीचे नजर से देखती है. The world looks down upon. Okay, okay. अब उल्टा बोलिए कि दुनिया हम लोगों को बहुत इज्जत से देखती है. The world looks up. लुक्स अप, डाउन की जगह लुक्स अप, और वहां लुक्स डाउन अपॉन था. अभी सुना, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस इंडियंस. द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस इंडियंस. हाँ, थोड़ा सा फ्रेज बदल जाता है. लुक डाउन अपॉन, लुक अप टू. ओके, इज्जत की नजर से देखते हैं, लुक अप टू. नीचे नजर देखते हैं, लुक डाउन अपॉन. ठीक है, बात समझ आई? ऑलराइट. तो आपके छोटे भाई बहन आपको इज्जत की नजर से देखते हैं. योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लुक अप टू यू. दे लुक अप टू यू, मतलब आपके जैसा बनना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो भी वो करें. राइट, दे लुक अप टू यू, तभी ना इज्जत की नजर हुई. और जब आप किसी तो दे यू लुक डाउन अपॉन देम. ओके, चलिए एडिशनल फ्रेज था, अगर प्रैक्टिस करने का मन करे तो कर लेना. पुट इट डाउन, और ऐसे रिकॉर्डिंग में आ रहा है, लेकिन अगर आप कहीं पर नोट करना चाहिए, इट्स अप टू यू. ओके, look down upon somebody, look up to somebody. Okay, us. Okay. लड़कियां कभी हम लड़कों की प्रॉब्लम नहीं समझेंगी. गर्ल्स विल never understand the problems of us boys. The problems of us boys. Okay, ये us समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, लड़कियां भी बोलते हैं यही बात कि लड़के हम लड़कियों की प्रॉब्लम कभी नहीं समझेंगे. सर कैसे बोलेंगे? The boys. हाँ, जल्दी बोले, लड़कियां ही खाली बोले, लड़के छोड़ दें. बॉयज कैसे बोलेंगे, लड़कियां कैसे बोलेंगे? लड़के हम लड़कियों की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे. बॉयज कांट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स. क्या छोड़े हुए एसफी, छोड़े हुए एकदम, कोशिश नहीं कर रही. एक तो 5-6 हो तो फिर प्लीज कोशिश करो. 2-3 तो तुम्हारी दोस्त है नहीं यहाँ पे. चलो ट्राई करो, बोलो जल्दी से. कैसे बोलना है? मेरी छोटी प्यारी बच्चियां दोनों रात रहती तो फट से बोल देती. ठीक है, उनको झिझक नहीं लगती है सर, अभी गलत सही वो फटाक से बोलती हैं. हाँ बताओ. अरे क्या बोलना है? लड़के हमारी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे. अभी बोल के दिखा दिया था, फिर उसी को बोलने में मुश्किल हो रही है. लड़के लड़कियों को चेंज करना था, क्या करना है? द बॉयज के नहीं, द बॉयज की बात नहीं करे. बॉयज लड़के, द बॉयज नहीं लड़के. द बॉयज मतलब कोई खास लड़के, हम कोई खास लड़के की बात नहीं कर रहे. बॉयज कांट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ. हाँ, लड़के तुम ना बोलना, अस गर्ल्स. ठीक है. ओके डन. उसने कहा देयर वर सम ग्रेट प्रोग्राम्स फॉर अस चिल्ड्रन. देयर वर सम ग्रेट प्रोग्राम्स फॉर अस चिल्ड्रन. तो आप अपनी कम्युनिटी के बारे में ऐसे यूज कर सकते हैं, वी और अस वर्ड यूज करके. और दूसरों के लिए क्या बोलते हैं? दे एंड देम. ओके. Can tell you. We I can tell you is an expression you use just to make your statement stronger. This guy is going to commit some crime, I can tell you. इसका मतलब, मैंने कहा ये पक्का. हिंदी में बोलते हैं हम बता रहे हैं तुमको. एक फ्रेज सुना है, हम बता रहे हैं. ठीक है, अश्वी ये लड़की फंसाएगी तुमको, हम बता रहे हैं तुमको. हाँ, ये फंसाएगी तुमको, बता रहे हैं तुमको. तो हम बता रहे हैं तुमको, व्हाट इज दिस? हम बता रहे हैं तुमको. I can tell you this girl is going to get you in trouble. I can tell you this girl. हाँ, you are going to get her in trouble. ऐसे ही मजाक कर रहे हैं. ओके, बस खाली सेंटेंस बोलने के लिए ऐसे ही बोलते हैं ना. मम्मी पापा भी कहीं बोलते हैं, ये फलना दोस्त को छोड़ो तुम, वो तुमको फंसाएगा, हम बता रहे हैं तुमको. Right, he will spoil you, he will get you in trouble, he will put you in. I can tell you is just making that statement stronger. तो उसका खाली पर्पस है I can tell you का, कि जो आप बोले हैं उसको और ये ऐसा नहीं कि मेरी बात सुनने के बाद हिंदी में ना सोचे. हिंदी में इसकी मतलब, इसके क्या बोलते हैं हम लोग? बता रहे हैं तुमको. पिटा जाएगा बेटा तुम आज, बता रहे हैं तुमको हम. मम्मी बोलती है ऐसा, तो यही तो है. You will definitely face some music today. You will definitely
हाँ, ये इडियोमैटिक तरीका बोलने का, पिटाएगा, पनिश होएगा तो। फेस सम म्यूजिक, ऑलराइट। हाँ, इफ यू फेस म्यूजिक तो आपको मिल रहा है सुनने को, ठीक है। थप्पड़ अप्पड़ भी हो सकता है, ठीक है, पनिशमेंट भी। ओके, फेस म्यूजिक। ओके। तो लाइन लाइन क्या थी बेटा? There were some great programs for us children, I can tell you. Yeah, there were some great programs for us children, I can tell you. Okay. We had real stories in those days. We had real stories in those days. We had real stories in those days. Yes. We had, yeah, we had real stories in those days. Face the music. All right. Face the music मतलब क्या था? हाँ, जो अभी बताया था, फेस द म्यूजिक मतलब क्या था? पनिशमेंट, मेनली पनिशमेंट। बाकी और भी, अब जैसे सबको पिटाई होती है क्या? मान लो यू आर डीएम एंड यू वेंट अगेंस्ट द सीएम्स ऑर्डर, देन यू विल फेस द म्यूजिक। क्या करेगा वो सीएम? थप्पड़ मारेगा आपको। व्हाट विल ही डू? ही विल ट्रांसफर यू इन अ बैड प्लेस। दैट विल बी, हाँ, तो आपको पता चल जाएगा यू आर फेसिंग द म्यूजिक। या बी रेडी टू फेस द म्यूजिक इफ यू डोंट लिसन टू मी। Be ready to, if you don't listen to me, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तैयार रहो फिर झेलने के लिए। सही है? Be ready to face the music if you don't listen to me. Okay. तो ये सब तो मैं अलग से ऐसे प्रसाद बांटता ही रहता हूँ, थोड़ा 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 थोड़ा, बस लेते जाइए। इसका कोई बात हुआ था? ये 5,000 में इसका बात हुआ था? ये अलग से है कि नहीं है? फिर हमेशा रहेगा ऐसे। आई एम अ वेरी दिलदार टीचर, बिग हार्टेड, जेनरस, हाँ, जेनरस। ये आई एम अ बिग जेनरस टीचर, बिग हार्टेड। हम नहीं कह रहे कि 5,000 में ये थोड़ा सा भी इधर नहीं जाएगा, इधर थोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। 5,010, 5,015, 5,020, 5,050, हाँ, उतना तक जा सकता है। ओके। All right. Shall we continue? What was the last line? There were some great programs for us children, I can tell you. We had real stories in those days. We had. Did your mum and dad... Children's TV started. There were some great programs for us children, I can tell you. We had real stories in those days. We had real stories in those days. Did your mum and dad give you pocket money? With same, Adnan beta, एक ही चीज चल रहा है। आप एब्सेंट हो गए थे बेटा कुछ दिन। Don't do that. Okay, be regular. Okay. क्या था सेंटेंस? Did your mom and dad give की gave? Give. Question में did subject V1 तिकड़ी है। Did your mom and dad give you pocket money? मम्मी पापा पैसा देते थे, पॉकेट मनी देते थे? Did your mom and dad give you pocket money? Yes, but I worked for it. Yes, but I worked for it. फ्री में नहीं मिलता था। I worked for it. How many of you get pocket money when you work for it, or if you work for it, or you just get pocket money for free? You get pocket money for free, right? Most of us. But I think it's a good idea to make your children do housework and give them some money in return, because your children will learn a lesson that in life nothing is free. And that's true. Nothing is free. In this world, there is nothing free. You have to work for everything you have, you earn, you will get. You have to work. A lot of children don't learn this because their parents keep giving them money for free. And I mean, of course, you need clothes and food, and these are basic
requirements, they must be fulfilled. But then parents also give you 2,000, 3,000 rupees to have party with your friends. But that money should not be free. I think that's when children start to take that money for granted. You know, they start to take things for granted. अरे ये तो ऐसे ही मिलता है, इसमें क्या बात है? And when they don't get it, they start to feel, they start to feel unhappy about it. When they grow up, they become adults, they expect the same things. But it's very important that your parents are a little strict with you. They should love you, of course, but they should also be strict to teach you some values, some manners, some real things about the real world. Okay. So I support this idea of giving pocket money. My brother doesn't agree with me. He says, पैसा देना है क्या पूरा ऐसे ही जो चाहिए उनको ला के दे दो. I said, they will learn to handle money if you give them money. Slowly, they will develop skills. A lot of people can't handle money very well. They have problems when they get married, they have children, they struggle because they didn't practice it. I know a couple of students, they had no option to go to their mummy and papa to borrow money to give gifts to their friends. Parents said, you have your pocket money, you decide what happens in your circle. If it is your friend's birthday, you decide what you will give, where you will get the money from. I'm not going to help you with that. I'll give you pocket money every month, every week, something. You decide if this month a friend has birthday, then how you should not waste your pocket money. I think it's a great way to raise children. Give them experience of the real world from early childhood. Okay. When I was young, I would simply go to my mummy, फलना का birthday है, कुछ खरीद के देना है, दीजिए ना पैसा. So where was the responsibility? And even today, I don't have much financial responsibility at home. I work, but I don't take responsibility. I don't take responsibility at home. I give the money to my mom and I say, you handle it. I don't. Because I'm not very comfortable with it. Because I didn't do it in my childhood. I've always been like this. I think it's not a good thing. You should give your children exposure. You should give your children responsibility so that they can learn from all these things. ये तो मेरी फिलॉसफी हो गई फिर से. ये सब मानना जरूरी है आपके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये सब मानना बिल्कुल जरूरी नहीं. ये मेरी राय है ना? आप इसको कूड़े के ढेर में से डाल दें. हाँ, बिल्कुल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये मेरी राय है. हाँ, इंग्लिश के बारे में जो बताऊं उसको कूड़े में मत डालो, उसको फॉलो करो. ओके, ये उसको दिमाग में डालो. ऐसे तुम्हारा दिमाग भी एक कूड़ेदान है. ऑलराइट, ले लिया बदला मैंने. हाँ, ओके. कम अगेन. कम अगेन. Who was it? Who was it? अमन. क्या बोला? अमन को फंसाया. अच्छा, खड़ा बेटा उमर, तू खड़ा हो. तू खड़ा हो. मेरा सीधा बच्चा को फंसाएगा तू. मेरे को टीचर समझा. खड़ा हो, तू खड़ा हो. अमर, उमर खड़ा हो. खड़ा रह तू. उसका नाम क्यों लिया? वो कुछ बोला ही नहीं था. उसकी आवाज इतनी डिस्टिंक्ट है. His voice is so different, right? Yeah, it's easy to notice. You trapped yourself. You fooled yourself. Who was it? तुम ही थे. तो इसलिए उसका नाम लिया. क्या कहा था तुमने? क्या कहा था? तो बेहतर यहाँ डाले कि उस कूड़ेदान में डाल दे. बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा बेटा, बैठ. You know what? फूल हो गया कूड़ेदान. अरे कब से नहीं आया कूड़ा वाला. Okay, guys, when I was a young boy in class 10th, there was a teacher, Shamdev Pandey. Yeah, we used to call him Pandey sir. And he had his dialogues. सूरजमुखी, ऊपर से सूरजमुखी लगता है, अंदर से चुड़ैलमुखी है. All right. So he would, good looking guys, he would call the good looking guys, ऊपर से सूरजमुखी लगता है, अंदर से चुड़ैलमुखी है. And I was cute. I was in class 10th. I was a short height guy. I was cute. Okay.
I was not big boy, and big boys start to look different now. You're just like, you have him, you have him. These guys look cute because they're small, right? So I used to look small and cute. He never got angry at me. And one day he said something. Yeah, he said Bahubirhi Samas. Okay. So he was sitting there, and I was the third bench from him, first, second, third bench from him. And I covered my mouth and said, Bahut badhiya samas. Bahubiri Samas. I wanted to have some fun, so I also did that. Bahut badhiya Samas. And unfortunately, in that moment, nobody was speaking. So the voice got pretty loud, he heard it. Kaun tha re? I did not say it was me. I was so afraid. He used to beat very, very, cruelly, in a cruel way, very badly. I didn't say anything. There was a guy sitting next to me. Sir said, it was you. No, sir, it was not me. लेकिन उन लोगों को ये शायद पता नहीं या किसी ने बोला नहीं कि किसने बोला, I don't know, but my name didn't come up. उसकी लगी उस दिन, and I was just sitting there feeling bad कि मुझे pity because of me. So yeah, I know that, that's why I said, सर फंस गए, हम थोड़ी फंसेंगे, मेरे को पता चल जाता है. Sir was 55 maybe. I'm 45 only, okay? Yeah, maybe 10 years, in 10 years time you can try this again. Maybe I will fall for it. I mean, come on. Aman's voice is so different. Anybody would notice it was Aman if he said something. Okay, carrying on, dosto. Last line was, did your mom and dad give you pocket money? Well, I bought a comic called You. We had real stories in those days. Did your mum and dad give you pocket money? Yes, but I worked for it. I worked for it. I cleaned the kitchen and did the washing up. Easy sentences. I cleaned the kitchen, did the washing up, kitchen साफ करते थे, बर्तन धोते थे. I cleaned the kitchen. I cleaned the kitchen. तो और बचा ही क्या बोलने के लिए? 3 ही वर्ष तो हो गया. हम किचन साफ कर देते थे, बर्तन धो देते थे. I did the washing up. Did the. अब कुछ लोग वॉशिंग खाली छोड़ेंगे तो बर्तन धोना नहीं, कपड़े धोना होगा. और अप लगाओ तो बर्तन धोना. I did the washing. कपड़े धो देते थे. I did the washing up. बर्तन धो देते थे. I did the washing. कपड़े धोना. I did the washing up. बर्तन धोना. Okay. We didn't have dishwashers in those days. We didn't have. We नहीं था. We didn't have dishwashers. We didn't have dishwashers in those days. We didn't have dishwashers in those days. तो मेरा बच्चा अरसलान, बताओ क्या हुआ इसका मतलब? We didn't have dishwashers in those days. नहीं पता चल रहा है? अच्छा, डिशवॉशर की जगह वॉशिंग मशीन बोल देते हैं. We didn't have washing machines in those days. अभी पता चल रहा है इसका मतलब? नहीं पता चल रहा है? ओके, कोई बात नहीं. तो जब नहीं पता चले ना, तो चेहरे का एक्सप्रेशन होना चाहिए. ठीक है, इससे मतलब कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हिल हो. अच्छा, ये इससे क्या पता चला? हाँ, समझे. तो एक्सप्रेशन वैसे होना चाहिए जो फीलिंग है. मुझे पता है कि बाकी क्लासेस में आपको ऑनेस्ट होने के लिए थोड़ा पनिशमेंट भी मिल सकता है कि नहीं समझ में आ रहा, पिटाई हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि समझना आपकी मजबूरी हो. अरे, समझाना मेरा काम है. आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी गलती थोड़ी है. इसलिए आप क्यों गिल्टी फील करेंगे? आप क्यों दोष दिखाएंगे, झूठ बोलेंगे कि नहीं नहीं समझ में आ रहा है? तो क्या आप मुझसे वो कम्युनिकेशन कर सकते अपने चेहरे से कम जब मैं पढ़ा रहा हूं तो? ठीक है, कि आपको नहीं समझ में आएगा तो चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए? नहीं समझने वाला. और जब समझ में आए तो समझने वाला. चलिए, आपसे बोलेंगे आई क्लीन द किचन का मतलब निकालिए. क्या हुआ? आई क्लीन द किचन. ये तो किचन साफ करना में आई क्या कर रहा है? आई क्लीन द किचन. ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किसी स्टूडेंट से तुम एक सेंटेंस बोलो और उसका वो एक हिस्से का ट्रांसलेशन करके बैठ जाएगा. आई क्लीन द किचन. मैंने कहा आई क्लीन द किचन. अब इसकी हिंदी बोलिए. मैं किचन साफ कर रहा हूं. बात बनी?
अब समझ में आया कि परेशानी कहां से आएगी? आई एम क्लीनिंग द किचन, इसका मतलब क्या हुआ? कोऑपरेट करना, क्योंकि हल्का सा वहां पर जहां पर हम चोट कर रहे हैं ना, उसका दिमाग काम करना शुरू करेगा बी से। बस 5 मिनट उसके साथ बिताएंगे और इसके बाद ये यहां से लगातार, अगर इंटरेस्ट है इसको, तो ये लगातार कैच करेगा उन बातों को। बेटा आई एम क्लीनिंग द किचन, तो आई क्लीन द किचन, एक ही मतलब दोनों का। तो दो तरह से क्यों बोलेंगे फिर एकदम वर्ब बदल बदल करके? अच्छा, ये ग्रैंडफादर बात कर रहे हैं ना, अपने बचपन के बारे में बात कर रहे हैं ना, इतना पता है आपको तो अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं करके ऐसे ऐसे करने की आदत डालेंगे, क्योंकि हम एक जब इस क्लास में आएंगे तो एक भी एक चीज बदलनी चाहिए। हाँ बोलने के लिए ये वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये क्या होता है? ना होता है बात पूरी दुनिया के लिए, हम लोग के लिए सारी दुनिया के लिए हाँ कैसे होता है? ऐसे। इस पे एक बहुत बड़ा जोक है एक मूवी में, उस मूवी का नाम है फ्लेवर्स। ओके, उसमें एक इंटरव्यू है, एन अमेरिकन बॉस एंड एन इंडियन एम्प्लॉय। तो इंटरव्यू हो रहा है, तो वो बोलता है इज दैट ऑल राइट? तो बॉस बोलता है इज दैट ए यस और नो? यस। व्हाट? यस। Boss is getting to hear yes and getting to see no. He's totally confused. It's so funny, you know. So yeah, करते हैं हम लोग के अलग बॉडी लैंग्वेज इस मामले में, बट स्लोली एंड स्लोली विल चेंज। यस ऐसे है, ठीक है? यस कैसे है? ऐसे बड़ी मुश्किल लग रही है बेचारे को, आदत है ऐसे से, मुझे तो हिल ही नहीं रहा, गर्दन उसका अटक गया है। ऐसे की आदत है ना, तो धीरे धीरे चेंज जाएगा बेटा। वो ग्रैंडफादर बता रहे अपने बचपन के बारे में, तो क्या बोले होंगे कि आई क्लीन द किचन? क्या बोले होंगे? वो क्या बोले होंगे? आई क्लीन द किचन। ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडसन से बात कर रहे हैं, दादाजी अपने पोते से बात कर रहे हैं, क्या बोलेंगे बेटा? आई क्लीन द किचन। अपने बचपन के बारे में क्या बोलेंगे? अगर आपके दादाजी आपसे बात करें बचपन के बारे में, तो क्या बोलेंगे? आई क्लीन द किचन। हम साफ, हाँ, या करते थे, पैसा मिलता था, पॉकेट मनी मिलता था, तो करते थे तो आई क्लीन द किचन। गौर करिएगा, करते थे तो आई क्लीन द किचन, और आई एम क्लीनिंग द किचन मतलब कर रहे हैं। अभी हाथ वाथ गंदा होया हुआ है, किचन आधा साफ है आधा बचा हुआ है, किचन साफ कर रहे हैं। आई एम मतलब इन द मिडिल ऑफ इट, स्टार्ट कर दिया है, खत्म, आई एम क्लीनिंग द किचन। ठीक है? दोस्त बुला के चलना बाहर घूम के आते हैं, मोमोज खा के आते हैं, नहीं बे अभी किचन साफ कर रहे हैं, आई एम क्लीनिंग द किचन। ठीक है? और कल हम किए थे साफ, मम्मी आज भैया को बोलो, कैसे बोलेंगे? यस्टरडे आई क्लीन द किचन, आस्क भैया टू डू इट टुडे, आस्क भैया टू डू इट टुडे, राइट? ओके। आप मेरे से बात करें क्लास के बाद, ओके? Oh, that's terrible. That's terrible. That's ये तो एकदम बकवास वाला बात हो गया. He is not happy about it. Now tell me, does he have a dishwasher in his house? That's why he is saying this. A child who has always seen an AC in his bedroom, when you tell him that in our days, when I was a child, there was no AC, then how did you sleep? Without AC? Without AC in the summer? Okay, so yeah, children, that's terrible that you didn't have a dishwasher. A dishwasher is like a washing machine. Dishwasher washes dishes and washing machines wash clothes. Okay. We didn't have a dishwasher in those days. In those days. How much pocket money did you get? 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 अभी अंदाजा लगाने के लिए बोले अरसलान को, अरसलान अंदाजा लगाओ क्या पूछा बच्चे ने? How much pocket money did you get, grandpa? क्या पूछा उसने? आपके पॉकेट में
हाँ, वेरी गुड, अब सही पकड़ लिया तुमने। अभी इस बात को पकड़ के चलो। द ग्रैंडसन एंड ग्रैंडफादर टॉकिंग अबाउट ग्रैंडफादर चाइल्डहुड। तो ग्रैंडसन आस्क्ड, हाउ मच पॉकेट मनी डिड यू गेट? अब हिंदी समझ में आ गई, अब रिपीट करना इंग्लिश। हाउ मच पॉकेट मनी डिड यू गेट? Alright. When I was in model middle school, my pocket money was first 10 paisa, okay, and then it became 15 paisa, and then 20 paisa. I think in class 6th or 7th, it was 4 ana. In class 8th, it was 8 ana. And in class 9th, it was 1 rupiah. In class 10th, it was 2 rupiah. Two samosas for 2 rupiah. 1 rupiah each. There was a shop, Thela, Raj Hari Bhandar. You see Neer Hari? So Neer Hari's brother was Raj Hari. Lunchtime, oh my God, there would be around 50, 60 boys all yelling at him, make do, and they would all be giving him money. And two, three guys had to take care of so many boys. The samosas tasted yummy, the smell. I think when you're young, you eat a lot. You're hungry. Your stomach works differently when you're young. I can't feel the same excitement for food anymore. अब खाने के लिए वो excitement नहीं आता. The excitement that I had in my 30s, in my 20s, I can't feel the same excitement. I'm telling you something that you guys will experience later. पता नहीं, देखो, बड़े लोग तुम्हारे घर में हैं, ठीक है, मेरी उम्र से ज्यादा के लोग भी हैं, मेरे से थोड़े कम वाले भी होंगे, लेकिन उनमें से कई ना अपने अनुभवों को उतना ऑब्जर्व नहीं करते, नोटिस नहीं करते, और उसको फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जैसे मैंने अभी ये बात बताई, लाइक when Papa brought something, maybe guavas or maybe peda someday in the afternoon, oh my God, the excitement, oh my God, I'm gonna get to eat pedas. अभी पेड़ा रखा है रूम में, बात समझ में आ रही है? It was Friday 2 days ago. I bought an arsa for my mom. She fasts on Friday. Santoshi Mata ki main to aarti utaru re. So she does that. Okay. So I thought, okay, she'll like it. So I gave her some anarsas. She distributed it among us all. Okay. My share was one, and it was kept. Today is Monday. Today I ate. It was kept from Friday, and today I ate. अगर मेरे को कोई उस समय बोलता व्हेन आई वाज 10 12 इयर्स ओल्ड कि तू ऐसा बन जाएगा, मैं कहता पागल है, मेरे को जैसे मिले तुरंत खा जाओ, दूसरे का ले खा जाओ। दैट इज हाउ एक्साइटेड आई यूज्ड टू बी, आई वांटेड द बिगर शेयर ऑलवेज, सारा मुझे दे दो। आई वाज लाइक दैट, ऑलवेज हंग्री। माय नेम वाज another word, Dalitdar. So that Dalitdar has changed into this. Why? How? A Dalitdar changed into this person who is keeping his anarsa, tasty anarsa, for 3 days. So, age changes you, makes the difference. So don't think you are going to remain this way. ऐसा मत सोचना तुम ऐसे ही रहोगे, ये मत सोचना. All right. My dad gave me 6 pence a week. My dad gave me 6 pence a week. Forget about pence and penny and all. Just think about it like 6 rupiah, 6 paisa, 6 ana, aisa kuch bhi socho. Doesn't matter, because he's talking about English currency. We don't care. Okay. So my dad gave me 6 pence a week. Per week, 6 pence. 6 pence a week. All right. Do you have a fixed amount of pocket money you get? Anybody here? Yes, Asim, how much? How much? 2,000. 2,000. 2,000 rupees a week or a month? Asim gets 2,000 rupees a month. A month. It means every month 2,000. Every month 2,000. He gets 2,000 a month. Okay, easy. Anybody else gets a fixed amount of pocket money? Anybody here? No? Yeah, Mashuk? Do you get a fixed amount of money? How much? 2,000 rupees per month. Per month or a month is the same thing. Mashuk also gets 2,000 rupees a month. That is his pocket money. All right, good. Fine. How much water do you drink? Again, you can use this idea. I drink 3 liters a day. I drink 3 liters of water a day. All right. Any problems?
How much do you earn? I earn 40,000 rupees a month, like that, a month. Okay, easy. Okay, fine. So he got 6 pence a week. That's 2.5p these days. That's 2.5p these days. अब उस समय का pence अभी का p उसने convert करा है. That's 2.5p these days. आज का देखा जाए तो 2.5p. Okay, 2.5p और 100p मतलब 1 pound. बात समझ आ रही है ना? 100p means 1 pound, and he got 2.5p a week. कितना कम, थोड़ा सा पैसा, right? आपको पता है when India became independent in 1947, आटा was 10 पैसा kilo. Atta was and chawal was 12 paisa kilo. Gold was 80 rupees per 10 grams. 80 rupees, 90 rupees, 80 rupees, 90 rupees per 10 grams. I remember when I was a young boy like you, Sachit, I ate 10 golgappas for 1 rupiah. 10 golgappas for 1 rupiah. Yeah. And then they started decreasing the number to 8, 6, 5, 4, 2. And that day, those days, I used to feel like 2 golgappas now only. Okay, we were not very happy about it. So, सबसे ज़्यादा मुझे गोलगप्पा खाने में गुस्सा आता है, you know. When I go to eat golgappas, of course, I don't eat a lot now, means maximum 20 rupees. But when I eat only 12 golgappas, 10 golgappas for 20 rupees, then I think, yaar, those were the days. Okay. He didn't give me much, did he? He didn't give me much, did he? ये बातचीत करने का अंदाज है. बातचीत में आदमी ऐसे ना करके बोलते हैं ना, ज्यादा नहीं देते थे ना. हम लोग भी ऐसे ही बात करते ना. बातचीत कैसे करते हैं? ज्यादा नहीं देते थे ना, थोड़ा सा था ना, अच्छा लग रहा है ना, ऐसा करते हैं. तो ये जो है बातचीत का स्टाइल है, इसमें इंग्लिश में भी इसको करते हैं. He didn't give me much, did he? Did he? He didn't give me much, did he? गौर करना. He didn't give me much, did he? Did he ना भी बोले तो बात वही है, लेकिन ये बोलने से थोड़ा बातचीत वाला अंदाज बन जाता है. He didn't give me much, did he? You are enjoying the class, aren't you? You are? You are enjoying the class, aren't you? You like English, don't you? ये सब बातचीत करने का अंदाज है. ठीक है, टैग लगाना बातचीत में बहुत कॉमन है. कोलोकियल इंग्लिश, कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में टैग लगा के बात करते हैं. आदत होती है लोगों की, इसका कोई पर्पस खास नहीं होता, बस ये फ्रेंडली लगता है. ओके, कैन वी ट्राई अ फ्यू मोर? So we should wrap up now, shall we? We should wrap up now, shouldn't we? ऐसे, ठीक है. Let's wrap up now, shall we? ये भी है. Let's wrap up now, shall we? It's nearly 5 o'clock, guys. So we will wrap up. Please, ऑडियो फाइल सुनना है, एक्सरसाइजेस सारे करने हैं दोस्तों. पेज नंबर I know what you mean. I totally understand the concept of inflation. I understand the concept. I'm just having fun. Okay, I thought you were talking about the inflation and all. देखो बेटा, the page is in the group, okay? And 7.122, the audio file is already in the group. I'm just sharing it one more time. भाई आप जितने दफे हो सकते हैं सुने, जितना आगे आई हो ना जरा बेटा, इससे बहुत आगे जाना है. फर 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 बोलना है, ये नहीं कि 1-2 लाइन. अपना एम रखो बनाकर और उसके लिए काम करते चलो. अभी तक इतना करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा है या हो गया? हो गया है? तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करते चलो, हो जाएगा वो भी. ठीक है, सबके लिए मेरी यही सलाह है. कुछ ना करने से अच्छा थोड़ा बहुत करते रहे बस. ठीक है, डोंट बी आइडल. बस आइडल, not doing anything. Okay, I'll see you guys. Bye bye everyone, take care.